and welcome to a new episode of IBA Today podcast. Let's talk. Today, we welcome you to a new season of IBA Today podcast, and with a new guest, one of our most favorite of guests, I guess, one of our alumni, gold medalist, and one of the most experienced test prep teacher that I know. I'm Mr. Salman Ghaffar. How are you? अस्सलाम वालेकुम आई एम वेल अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं Allah Karam. So, from the last time we talked, how many of your students got into IBA? Oh, very large number, alhamdulillah. Did well. We are lucky in the sense that a lot of good students choose us to come prepare with us. So the results have been very encouraging, and we have a good number preparing for round two as well. Alhamdulillah. So let's talk about round two. Like students usually find it difficult, about IBAs after failing the round one. Ji. So what's the is the difficulty level changes? No, the difficulty level does not really change. I think IBA's testing service is actually very good at making sure that the round two test is similar in terms of the difficulty level to round one, because they want to make sure that they have consistency of admission within the same year. So the test level, the difficulty level does not change. Sometimes it may happen inadvertently, but that's not something that I think IBA testing service makes it a point to do. If you haven't cleared round one, it's pretty normal because maybe you were busy with your education, your intermediate, your A levels, and maybe you did not get time to prepare for the IBA test. So now that the exams have been pushed forward, there is sufficient time for people to prepare. There is a month from today onwards. The test is on the 4th of July, inshallah, the PBA and the accounting and finance test, and social sciences and economics. So I think there is sufficient time for people to prepare well, as long as they ensure that they start immediately. Right. So number one question that people feel that they lose motivation. Like after failing at one thing, they feel after being rejected or after being failed, like they lose the motivation to do it the next time, right? So how do you feel? How do you motivate your students to get motivated to give the round two? देखिए, failure is a part and parcel of life. You know, if you fail once, you should get up and try again. I've known students who've tried not once, not twice, three times, four times. You know, I mentioned to you earlier that I had a student who didn't get in a particular year at IBA, and he went to another university, but he applied the next year after a year again to IBA because he was highly motivated to get into IBA. Got in and graduated from IBA, did amazingly well. Mashallah, is in a great place right now. His name is Vishal. So that's something that you should always keep in your mind. You know, देखिए आई एडमिशन टेस्ट में majority फेल होती है, माइनॉरिटी पास होती है. इट्स अ फैक्ट ऑफ द टेस्ट. इट्स अ part and parcel of the test design itself. Almost 3,000 people apply in every round, and about 7 to 800 people at the moment currently are being chosen for every round. That's how it's going around. That's what the data shows us. So it's all right. I mean, that's about a 30% or close 25 to 30% pass ratio that you're looking at. It's all right if you didn't make it the first time. Look at the mistakes that you made. गलती करना is not a problem. गलती से ना सीखना is a problem. So please make sure that you do that analysis. And if you don't think that you have the right tools available to do that analysis, they can always reach out to me or my colleagues or people like me, and I'm sure they'll get the guidance. But don't lose hope. Like IBA has been that dream university. Like people are willing to take the gap year for it. Do you agree with that? People should take a gap year. It's the best. It's the best university. Sorry, Lumps. It's the best university in Pakistan for business. Because I'm obviously biased towards IB. I think Lumps is also amazing. But it's a dream university, and you've rightly pointed that out. I mean, if you put me through 4 years again, I'd do it again. So if you have to wait another year, all good things, they take time. Sometimes they take time, and then you value it even more. So it is perfectly fine. But एक पॉइंट ज़रूर है कि अगर आपका खुदा न खास्ता किसी पर्टिकुलर ईयर में एडमिशन नहीं हुआ और किसी और यूनिवर्सिटी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ एडमिशन हो गया तो आप चले जाएं, आप पढ़ाई शुरू करें, गेट योर लाइफ इन ऑर्डर. बिकॉज आज फारिग बैठना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन पुट योर सेल्फ थ्रू. और मे बी maybe you'll discover something new about yourself. I know people who went to other universities. Their dream university was IBA, couldn't make it, or did not come here or did not apply, and then went to other universities and are doing amazingly well in their lives as well. So IB is not the only passport to success. There are many other ways of success. Have your
योर सेल्फ फेथ. किसी और जगह चले गए हैं, वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, वेल फील फ्री टू अप्लाई अगैन. Agree. Like it matters to different people, like how they want to go about their lives. But like I've seen a lot of people who've taken gap years and doing successfully even now. Okay, you would think that an extra year will have an impact on your life. In the long run, it might not. To be honest, like a year here and there, and at this youth, I won't say it would really matter because this is the part of your learning. Absolutely, absolutely, and it happens to many of us. Life में कई दफ़ा आपको you have to take a step back to then move forward. It's perfectly fine. It happened to me when I was working and I took a step backwards in my career and then I moved in a different direction. So it's perfectly fine. It happens. Have your view on the goal, and the big price. And then for that, if you need to adjust your life accordingly, change direction, change the route, it's perfectly fine. Right. So I just wanted to ask you this question. Okay, a lot of people had asked us, okay, is it possible to clear the IB entrance exam without tuitions? देखिए, it depends upon a person. ठीक है जी, I know many people who've cleared the IBA test without the test preparation. And I'm sure that you know many people जिनको आप मिलते हैं IBA में, तो आप वंडर करते हैं इसका दाखला कैसे हो गया, राइट? तो ऐसा तो होता होगा. तो True, I do feel that. है ना, ऐसा होता है ना. तो मे बी दे वेंट टू अ गुड टेस्ट प्रेपरेशन प्लेस, एन एक्सपर्ट एंड हु हेल्प देम गेट इन. सो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट प्रेपरेशन का फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है. मेरा अपना स्कोर व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर द IBA टेस्ट, बिफोर द प्रेपरेशन एंड आफ्टर द प्रेपरेशन, देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 50 percentage points. That was the change that I saw in myself, and I know that, and I remember that very clearly because I was very organized about this. So before the preparation, my score was around 60 out of 140. After the preparation, it was about 96 out of 140. So that's how varied at that point it was. That's more than a 50% increase. So it helped me, alhamdulillah, and in the same way it helped many other people as well. तो आई थिंक इसमें आपको देखना ज़रूरी है कि आपका करंट लेवल क्या है. इसमें मैं एक सवाल का एक और एडिशन ऐड कर दूंगा कि देखें, अगर आप टेस्ट प्रिपरेशन नहीं करना चाहते या सोच रहे हैं कि शायद मैं नहीं अफोर्ड कर सकता या कोई और वजह है, आपके पास कन्वीनियंस नहीं है, तो आप you should pick up the IBA past papers and start solving them. Try to get the latest past papers. They're usually available on the IBA website. If you consistently score 70% plus in both the verbal and the math section, then you may not need the preparation. You can also practice content from the SAT material and see how you score on that. But if you're scoring less than 70% in the IBA test, or if it's taking you too much time, then you may need the preparation. Yeah, I'll just remind my viewers out there that I didn't go to test prep for IBA in general. So I practiced the past papers on the IBA's website. So you could do the same. I got in at IBA and you could do as well. So that does not mean that you, without any test prep, you won't be able to get in to Absolutely. IB. Absolutely. But let's talk about test prep in general. Okay, right now the crash courses are being started for the programs right G. now. G. So what do you think about crash courses? Well, obviously the full courses are better because you get the time to assimilate all that information and all that teaching. With crash courses, we are compressed for time, so we are trying to teach as many concepts as possible as quickly as possible. Students need to be able to practice those concepts as well. So it's not obviously as comprehensive as a full course is, but if you haven't taken the full course and you feel that you're at a level where you just need that additional 10, 15, 20% boost, which you can definitely get. देखिए, ये एक बात याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स जो है ना टेस्ट प्रेपरेशन के, दिस इज नॉट पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स विद द बेस्ट टेस्ट prep companies in the world, companies that make billions in revenues in dollar terms in test preparation. Even their average improvements are somewhere around 25%, 20-25% for SAT, for GMAT, for GRE. I do this for a living, so I keep a tab on these things. And if you can get an even 15-20% boost, that can actually be the difference between getting in versus not getting in. So it can be very useful. And उसमें crash course में हम एक और चीज़ जो बहुत regularly करते हैं, we teach a lot of shortcuts. How do you quickly solve the questions? How do you quickly do percentages? How do you quickly find ratios? That's really, really useful. So the shortcuts and the tricks itself could be worth the preparation time. Right. So when you talk about shortcuts, tips, and tricks, like most people, most students face these issues in the exam, and they're preparing for the exam, and they feel that there's not enough time.
So how to deal with that efficiently. So can you share some tips and Sure, tricks that you do? absolutely, absolutely. Why not? The first thing that students need to do, I'll talk in context. Usually, people don't have much of an issue with the verbal part in terms of timing. Either they know it or they don't know it. For example, if it's a vocabulary question, you know the meaning, you'll answer it. If you don't know it, spending 10 minutes on the question is not really going to help. But as far as the reading comprehension is concerned, make sure that you develop a reading habit. So read on a regular basis, attempt a lot of reading comprehension passages, especially from the SAT material, which is fantastic material. If you look at the college board material, it's available freely. You can practice that content. Build a vocabulary, learn as many words as you possibly can, and go through the sentence correction rules, grammar rules. Those are useful. That's for the verbal part. For the English, for the math part, you need to have quick calculation capability. You're mostly dependent on calculators up till your A levels or your intermediate. So you want to be able to keep that calculator away and try to do as many calculations as you possibly can. One thing that I remember, I was great at math, but I was very weak at calculation. So I used to add number plates of cars just to do them mentally, so that I would get used to the habit of adding, subtracting, multiplying, dividing on a regular basis. Learn your tables from 1 till 20. Learn your squares at least from 1 till 30. You should know all the squares. My kids know them. I made sure that they learned them. Learn your cubes from 1 till 12. Know the square roots of important numbers, root 2, root 3, root 5. Know the values of numbers like pi and all that. Those are basic numbers that you should remember, because you're stuck at a calculation. You have to do 7 times 15. I mean, if you're going to spend too much time doing that, writing it down, it's going to take away too much of your time. So learn your tables, do them on a regular basis, and pick up a pick up a buddy who can prepare with you. So they could ask you questions randomly and you could ask them questions randomly. Help each other that way. We have an app that we give out to our students, and they can use that for practice as well. Then look up tricks on how to do mental math. How do you square a number quickly? How do you multiply things by 5, multiply things by 10? How do you calculate percentages quickly? And these are skills that will live with you for the rest of your life. When you go into a career, you'll be able to do calculations and check values mentally much faster than other people. And that'll be useful to have. You'll be able to make quick decisions that way. So do all of that. Know your formulas. For example, if you're doing geometry, there's a whole bunch of formulas that you need to know for geometry, for areas, for volumes, and so on and so forth, for coordinate geometry as well. You're doing stuff like speed problems or ratios or Venn diagrams. You need to know those formulas, probabilities, and all that. So if you can grab hold of a formula sheet, we have one. We use one for our students as well. Grab hold of a formula sheet, learn it from cover to cover, make sure that you know all the formulas and you know when to apply and where to apply. बट एक बात याद रखें, देखें, जस्ट लर्निंग द शॉर्टकट इज़ प्री यूजलेस. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. मेमोरी का एक रूल है. वो रूल ये है, दिस इज समथिंग दैट मेमोरी एक्सपर्ट से, एंड आई सॉर्ट ऑफ सब्सक्राइब टू दैट व्यू, कि कोई भी चीज़ आपको याद करनी हो तो उसको 5 दिन तक रिवाइज करना ज़रूरी है. यू डू इट एवरी डे 5 days कंसिस्टेंटली विद द इंटेंशन टू लर्न. याद करने की नीयत के साथ तो आपको याद हो जाता है. ओके. और फिर उसका रिवीजन भी ज़रूरी है. अब टाइम आपके पास शॉर्ट है तो उस टाइम में आप एक लिमिटेड सेट ऑफ थिंग्स उठा लें और कहें ये मैंने याद करना है, और उसको याद करना शुरू कर दें. Right. So जैसे आप अभी कह रहे थे कि you should find you should doing it alone itself it won't be a productive thing activity, to be honest, doing जी. it alone, and you find a buddy around it. But then I was thinking the other day, एक बंदा है जिससे कुछ नहीं पता है, and then he was thinking, यार I need to find someone to do something else with me as well. So वो अपने से 5 और लूजर्स को ढूंढता है जिन्होंने और कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, और फिर वो साथ नेट के मिलते हैं और दे थिंक ऑफ इट, एंड देन वो एक प्रोसेस बनाते हैं जिस प्रोसेस को कहते हैं कंबाइंड स्टडीज. तो कंबाइंड स्टडी, सो कॉल्ड कंबाइंड स्टडीज. बाद जगह जब आप पेपर के साथ किसी के साथ बैठते हो, आप देखते हैं कि यार ये बंदा पेपर फ्लिप करता जा रहा है करते जा रहा है, यार मैं तो अभी इस सवाल पे नहीं हुआ हूँ. आप पेपर करके निकलते हैं, यू थिंक कि यार हो तो जाएगा यार, एंड यू सेड कि यार मेरा अभी भी सवाल रह गया, मेरा सवाल रह गया, एंड आई वाज, अबे भाई आई वाज लुकिंग एट यू एंड यू वर जस्ट स्लिपिंग ऑन पेपर लाइक डूइंग इट लाइक, एंड लाइक यू थिंक कि आपको उससे ज़्यादा सुकून मिलता है, बल्कि आप जब ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं ना एग्जाम टेंशन के हो टाइम, जाती है. हाँ यू विल स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस. तो बी काम ऑन योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ. आई वुड ऑलवेज से कि बिलीव इन योर सेल्फ. इफ़ यू हैव डन द प्रिपरेशन एंड आप इस तरह की कंबाइंड प्रोसेस नहीं बना रहे हो कंबाइंड स्टडीज़ का, तो इफ़ यू बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड इफ यू सिंसियर टू योर सेल्फ, आई थिंक यू वुड डेफिनेटली क्लियर इट. Moving on to
Uh, what happens if someone does not clear the entrance exam, round even round two? Hmm. What happens then? Well, obviously, if Khuda na Khasta you don't clear round two, then and you want to come to IBA, Mm. you have the 25th July test available, which is the computer science and the eco and math test available. If you are thinking or open in terms of a slight switch in the program, then you could apply there. Do 1 year and then apply again to IBA. Your credits will be transferred to the extent that they can be transferred. Mm. That is an open IBA policy. But again, you need to clear the test in 2022. Mm. So you'll have two chances again in 2022, inshallah, as long as tests do take place. So that's an option. And the other option is that you apply to another university, or you would have, by the way, very important, a lot of people make this mistake of applying to only one university. मैंने IBA जाना है, मैं सिर्फ IBA apply करूँगा. Don't do that. Apply to IBA, but also apply to other places, because you don't know. There's no guarantee. So give yourself, keep that option open. Apply to other universities, and उनके टेस्ट भी करीब करीब हैं. इनफैक्ट IBA से पहले हैं. तो एंड ऑफ जून में सारे टेस्ट आ रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, तो प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ भी अप्लाई कर दें. Agree. Like, to be honest, like, I wanted to go to NUST, right? So that was my game plan. I wanted to go NUST. I gave it twice. I didn't get in. Like, but at the same time, I was giving exam for GIK and FAST and IBA. I got into all three of that other institution. अल्हम्दुलिल्लाह. And I gave that, and I was given that choice. And और I आप chose GI के IBA. नहीं गए, आप IBA आ गए कंप्यूटर साइंस करने के लिए. इंटरेस्टिंग. इंजीनियरिंग छोड़ के And then कंप्यूटर I'm switching towards another field. साइंस. मीडिया में अब आप आ गए. I'm चले, media. Like, I एक्सीलेंट. wanted media here, but moving on with that. Okay, let's talk about the entrance exam. Coming back to entrance exam. What should one take to the exam? Let's go to the exam point of view. Obviously, the usual stuff. IBA does give a list of things that you need to take, or the stationery you have to take along. You have to take along your acceptable ID, which could be your ID card, or your smart card, or your passport, or your bay form. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव दैट अवेलेबल. अगर वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो उसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को अवेलेबल कर लीजिए ताकि परेशानी ना हो. और इसके अलावा सेल फोन्स अलाउड नहीं होता IBA टेस्ट में, तो अगर आप लेके जा रहे हैं तो यू हैव टू लीव इट इन योर कार, और यू हैव टू गिव इट टू द इन्विजिलेटर्स. मैं एडवाइस करता हूँ कि एक या तो सेल फोन ना ले जाएं ताकि टेंशन ना हो, और अगर टेंशन लेके जानी है, गाड़ी कॉल करनी है एक्सेट्रा, देन कैरी अ स्मॉल सेल फोन, तो सर यू कैन गिव इट टू द इन्विजिलेटर, नॉट वरी अबाउट इट. बट प्लीज़ डोंट कीप इट विद योरसेल्फ ड्यूरिंग द टेस्ट. That's a violation of the IBA policy, and you can get disqualified because of that reason. True. Like, I didn't take it, but like, when you're giving the IBA exam, you'll definitely find a lot of people there as well who will bring the phone. So I had that belief. कोई तो मिल जाएगा जिसके फोन से Exactly. आपको कॉल करनी है तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, और हाँ. पे फोन्स भी होते हैं, और IBA में भी पे फोन मिल जाएगा आपको, so should not be a problem. So that's going to that. But like, let's talk about the exam going point. Like, we're going in the exam, and I see a paper I have never seen as difficult as a paper when I was practicing. What do I Absolutely. do now? ओके, सो पेपर्स अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं. इट्स वेरी पॉसिबल. बट मेरी फर्म बिलीफ है, और आई थिंक ये अगर आप पास पेपर्स में देखेंगे तो आपकी बात नज़र आ जाएगी. मेरी फर्म बिलीफ है कि IBA के टेस्ट में तकरीबन 70% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी से मीडियम लेवल के होते हैं, और 30% क्वेश्चंस जो होते हैं वो मीडियम टू हार्ड लेवल होते हैं. ओके, तो जो मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस हैं वो आपने स्किप करने हैं. ओके, और जो इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं वो आपने पहले अटैम्प्ट करने हैं. देखें, IBA का टेस्ट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, वो हमेशा एक रैंडम ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी में आता है, अनलेस आप SAT का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी में होता है. सो SAT में आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 25 विल बी अ लॉट टफर देन क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो वो तो फ़र्क है. बट IBA में ऐसा नहीं होता. IBA में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन मिक्सड अप होते हैं और थ्रोन अराउंड होते हैं, और ये लम्स के टेस्ट में भी ऐसा ही होता है. जब लम्स का टेस्ट हुआ करता था, इस साल उन्होंने फिर लिया था. तो मेरी एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस ये है कि जो सवाल डिफ़िकल्ट है वो सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, वो हर एक के लिए डिफ़िकल्ट है. ओके, और अगर आप टॉप 5% को छोड़ दें, और अगर आपको लगता है कि आप टॉप 5% स्टूडेंट्स में नहीं हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं या बहुत माशाल्लाह ब्राइट होते हैं, तो आप अगर बिलीव करते हैं कि आप एक एवरेज कैटेगरी में बीच में आते हैं, तो आपने करना यही है कि आपने उसके हिसाब से आपने गेम खेलना है. राइट, आई मीन जिस तरह से हर बैट्समैन या हर बॉलर सेम कैलिबर का नहीं होता, इस तरह से हर स्टूडेंट सेम कैलिबर का नहीं होता, तो आपने उसके हिसाब से अपनी गेम खेलनी है. Be like Fawad Alam, if you're not Babar Azam, be like Fawad Alam, right? And play the game according to your limitations. So your limitations are कि यार let's say आपके functions बहुत अच्छे नहीं हैं, या आपके absolute values बहुत अच्छे नहीं हैं, या तो आप उस पर जो है फोकस, आप ठीक है प्रेपरेशन कर लीजिए. एग्ज़ाम में पहले वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें जो आपके सॉलिड हैं.
Hmm. जल्दी जल्दी करें उनको। एक बात सिंपल सा रूल है, आपने हर पेज पे अगर 5 सवाल होते हैं, जो कि इस वक्त आईबीए का करंट फॉर्मेट है वो ये है कि हर पेज पे वो 5 सवाल देते हैं। तो आपने गेम खेलना है जी, आपने कहना है जी 12, अगर टोटल लेट्स से 45 to 50 क्वेश्चन हैं तो 9 से 10 पेजेस हैं। आपने हर पेज को जीतना है, लाइक ए टेस्ट मैच। ओके, आपने हर पेज जीतना है। तो हर पेज आप कैसे जीतेंगे? 5 में से आपके 3 सवाल ठीक करने मिनिमम, Hmm. राइट। सो अगर 2 सवाल मुश्किल हैं, इग्नोर करें, आगे बढ़ जाएं। प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रैटेजी। ओके, और तेज़ तेज़ पढ़ें। ओके, डोंट गेट स्टक। स्टक नहीं, आपने आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, समझ रहे हैं ना उस बात को? तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। Right. ठीक है Don't जी, panic डोंट पैनिक, immediately. Right. डोंट पैनिक, मूव फास्ट, मूव फास्ट। आई मीन, प्ले द गेम। उस दिन सोच के जाओ मैं आज गेम खेलने जा रहा हूँ। ओके, आई एम दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट गेम ऑफ माई लाइफ, राइट। डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। Hmm. एक चीज़ जो मैंने की थी अपने टेस्ट से पहले, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मैं ऑब्वियस सी बात है, आई वाज़ अल्हम्दुलिल्लाह एबल टू गो टू स्लीप, वरना तो स्ट्रेस में लोगों को एक दफ़ा नींद भी नहीं आती। और फिर सुबह जल्दी उठ के मैंने जो है ना वो रास्ते में और जाते हुए, और मैंने अपने सारे वो जो था ना थोड़ी बहुत दिमाग चलाने के लिए मेरे पास वो अरिथमेटिक एक्सरसाइजेस थी, क्विक मैथ जिसको हम कहते हैं, उसको मैंने 4-5 रास्ते में वर्बली प्रैक्टिस कर लिया था, टू गेट माई माइंड इन टू मोशन। कि यार जब मैं एग्ज़ाम में पहुँचूँ तो मेरा दिमाग ऑलरेडी उठ चुका हो, ये ना हो कि मैं अभी पहला सवाल जो मैं देख रहा हूँ वो मैं उसी दिन एग्ज़ाम के दिन देख रहा हूँ। तो 4-5 क्विक मैथ अरिथमेटिक प्रैक्टिस करके जाने से मुझे ये हुआ था कि माई माइंड वाज़ ऑलरेडी इन मोशन, राइट। तो गाड़ी एक थोड़ा सुबह को आप स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड स्टार्ट होता है, टाइम लगता है उसका इंजन Hmm. गर्म होने में। वैसे ही सुबह सुबह कई दफ़ा लोगों का दिमाग जो है वो इट टेक्स टाइम। सो आपने ऑलरेडी इनटू मोशन डाल दिया। अगर आपका दिमाग उस तरह से ही काम करता है जिस तरह से मुझे ये सुबह को कभी कभार प्रॉब्लम आती है, तो दिस कुड बी अ गुड वे दैट यू स्टार्ट ऑफ। ओके। Right. So, any words of encouragement, that people who are going to the exam right now or will go perhaps in a couple of weeks? देखिए, मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वो ये है कि नफ़ा और नुकसान सारा अल्लाह ताला की तरफ से आता Hmm. है। ओके, तो आपका काम है मेहनत करना, बाकी रिजल्ट्स आपने अल्लाह ताला पे छोड़ने होते हैं। तो आप मेहनत ज़रूर करेंगे, मेहनत करना ज़रूरी है, वो शर्त है। बाकी होगा नहीं होगा वो किस्मत भी है, वो कुछ अल्लाह ताला की उसमें मसलहत भी होती है। सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट कि यार मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कभी ये हुआ या वो नहीं हुआ, या मैं चाहता था हुआ बट नहीं हुआ। डोंट डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, बिकॉज उस तरह से तो आप ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी मेहनत पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, और जो अपनी जहाँ वीकनेसेस हैं उन पे काम ज़रूर करें। ये ना करें कि आप चिल करके बैठ जाएं और कहें जी अम, मुझे क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। मेहनत करना एक हम सब पे फ़र्ज़ है। हाँ, आपको ऑलरेडी चीज़ आती है, आप कंफर्टेबल हैं, आपकी प्रैक्टिस सारी हो चुकी हुई है, ठीक है, देन इट्स फाइन, आप कंफर्ट ले सकते हैं। आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने शुरू से वो मेहनत की हुई होती है, उनका बेस बना हुआ होता है, तो वो कर लेते हैं विदाउट टू मच एफर्ट। बट आपको आपको अपना पॉजिटिव फोकस रखना है और मेहनत करनी है, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। Right. So coming to our last segment of our show, we'll start with the rapid fire round. That's one of our season रैपिड ticket फायर। that we're finding for this season. Let's start with the rapid fire round. One word for each and every question. So test prep. Anees Hussain, 2 words, but Favorite teacher at IBA. uh, well, lots of favorite teachers, but Dr. Manaz Fatma was an amazing teacher to be studying with. Right. Your favorite spot at IBA. Can I say library? No, no, no. Wherever the guys were, I used to obviously. be at the library before I found this. Well, our library was very old, very dilapidated at that point in time. No, wherever the guys were, so which was usually the lounge. Oh, Yeah, yeah. I don't think we have lounge Oh, we that had, again now. well, we had a Directly turn into lounge. classrooms. Yeah, yeah. So IB today. Groundbreaking, mashallah, fantastic. Thank you. This or that. Self-studying or tuition for entrance exam. Is this also one word, by the way? No, you Oh, can I choose can. this and that. So I answered that earlier ना, that आप प्रैक्टिस करें Hmm. पास पेपर्स की, और अगर आप 70% प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं विदाउट टू मच एफर्ट तो दैट्स फाइन, बट नहीं तो फिर यू शुड प्रिपेयर। Achha, undergrad in Pakistan or abroad? My opinion for a very long time has been that undergrad from Pakistan, but masters definitely from abroad. Definitely. SAT or entrance exam? Varies from university to university. Many universities don't accept the SAT, some do.
IBA does, but IBA के लिए बगैर इंटरव्यू के अगर डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो एस स्कोर तकरीबन 1400 प्लस चाहिए, 1410 1420 का लेवल. सो अगर वो स्कोर कर सकते हैं तो ब्रिलियंट, और पॉसिबल है. उसका मैथ कंपैरेटिवली इजी है IBA के टेस्ट से. अंग्रेज़ी उसकी कंपैरेटिवली टफर है बट कंसिस्टेंट है. सो अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो एस डेफिनेटली इज़ अ गुड ऑप्शन. मेन और सिटी कैंपस? Oh, main campus any day. नहीं, I'll choose city right now. I'm prince of this place. Well, that's your choice. I love them. यादें हैं ये पुरानी नहीं हमारी. यार, मेन तो like बट खैर अब most of my आपने classes I want main. आपने मेन कैंपस भी बहुत तब्दील कर दिया. इट्स स्टिल वेरी नाइस माशाल्लाह. या Thank you for Salman for joining us for the show, and this is the season opener, and I hope you all enjoyed the episode. I did this episode especially for you guys on the basis of IB entrance exam. I hope you all enjoyed. I wish you all luck, and I hope most of you get join IBA, join inshallah. IB today eventually. Then Inshallah. thank you so much. Thank you for inviting me. It was lovely being here.